yoga and Indian lifestyle a key to happiness, right? So what is yoga actually? So first of all, I would all like you to interlock your hands. Interlock your hand in front of you. Take it straight away on your head and make your spine straight. Exactly, right? And lower your hands and keep the spine absolutely straight like this. So what I did, I just channelized your spine. I just activated your 7 chakras, right? So this is yoga actually. Yoga is not just about asanas and, as Sir said, yoga is just not about asanas and all that stuff. Yoga actually touches your mind and soul, and that's how yoga is different from aerobics and any other exercise, right? So channelizing this, yoga touches your subtle system, right? When the Lord Shiva told yoga to Parvati, it was 5,000 years ago back. That time, from that sutras, yoga was keep coming in the Upanishads and all that Gita and all that stuff. सारी हमारी किताबों में योगा अभी तक था, but वो थोड़ा सा scattered था. So Patanjali was the first Maharishi, 300 BC. आज से लगभग 300 साल पहले पतंजलि महर्षि हुए थे, जिन्होंने हमारा योगा को एक जगह पे स्कैटर्ड योगा को, जो हमारे सारी बुक्स में अभी तक कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था, उन्होंने स्कैटर करके एक जगह पे उसको कंपाइल किया. एंड दोज सूत्रास आर कॉल्ड एज पतंजलि's योगा सूत्रास, in which he taught about the 8 steps of yoga, Ashtanga yoga, which we practice till today. जो हम आज की मॉडर्न एरा में भी जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, that is our अष्टांग योग. अष्टांग योग is what? यम नियम आसन, that are the first 3 steps. प्राणायाम, प्रत्याहार, 4th and 5th. Then dharana, dhyan and samadhi. That are the total 8 steps which we practice. And this is the way to moksha. Yoga is not to keep you healthy. Yoga is not to keep you fit. फिटनेस इज अ वेरी वेरी छोटा भाग जो है, छोटा एस्पेक्ट जो है योगा का. योगा में हम बहुत ऊपर की एक चीज को टच करना चाह रहे हैं. योगा में हम बहुत एक जो आप लोग भी शायद सोच से परे हैं, हम वो चीज टच करना चाह रहे हैं. उस चीज के लिए योगा बना है. योगा सिर्फ आपकी टमी को अंदर करने के लिए या आपके थायराइड इशू को ठीक करने के लिए नहीं बना है, राइट? वो थायराइड इशू और टमी इशू तो आपके यम नियम और आसन पे ही और प्राणायाम पे ही क्लियर होना शुरू हो जाते हैं. हम उसके बाद प्रत्याहार पे जाते हैं और धारणा ध्यान समाधि पे जाते हैं, राइट? वहां पे असली यात्रा शुरू होती है, अंतरंग योग की यात्रा शुरू होती है हमारी धारणा ध्यान समाधि पे. ये बहिरंग योग है, जो यम नियम आसन प्राणायाम बहिरंग योग बाहर की तरफ से आते हैं. जहाँ पे प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग योग की शुरुआत हो गई. फिर हमको अपने अंदर के ब्रह्मा को ही तलाशना है, अपने अंदर के ब्रह्मा को ही देखना है, ढूंढना है.